we have one complex number z, that is nothing but x plus iy, and its magnitude is nothing but under root x square plus y square. Angle is nothing but, angle of z is nothing but tan inverse y by x. Z is any complex number x plus iy, its magnitude is under root x square plus y square, angle of z is tan inverse y by x, then conjugate. So in this unit we will denote conjugate by bar. So z bar is nothing but indicating the conjugate. Z bar is indicating the conjugate. So it is given by conjugate of x plus iy is x minus iy. Conjugate of z is x minus iy. Magnitude is under root x square plus y square. Z is x plus iy. Conjugate of z is x minus iy. So there is one relationship between z, z bar and magnitude. Okay, so that relationship is nothing but z into z bar, that means complex number and its conjugate multiplication. Just solve this, what it will be then. So z is x plus iy, z bar is x minus iy. Solve this and tell me in terms of z, magnitude z. What it will be in terms of magnitude of z. What it will be in terms of magnitude of z. Try to solve it. So x into x, x square. I hope you are keeping rough notebook with you while attending lecture. So x into x, x square minus x iy plus ixy minus I square into xy. So this ixy and minus ixy get cancelled. So that is nothing but x square minus I square is nothing but minus 1 into xy. Sorry, x not xy here, y square. Iy into minus iy is I square y square minus I square y square. This is y square. So it becomes x square plus y square. X square plus y square. And that is nothing but magnitude z square. Because magnitude z is under root x square plus y square. Magnitude z is under root x square plus y square. Take it square. So it becomes z square, magnitude z square equal to x square plus y square. Okay, so we got one relationship that z into z bar is magnitude z square. Z into z bar is magnitude z square. Now, as it is a complex analysis, so you must know basic identities like what is value of I, or instead of I shall we use j? Instead of I we will use j. So j is nothing but under root minus 1. J is the complex number. I, j both are used to denote complex number. So j is under root minus 1, j square is minus 1, j cube is, anyone, what is j cube? What is value of j cube? What is the value of j cube? Anyone? Simple MCQ question. What is value of j cube? Anyone? What is value of j cube? Minus j, minus j. So j cube is nothing but minus j. So j cube can be written as j into, j cube is written as j into minus j square, and j square is minus 1. So j cube is nothing but minus j. J square is minus 1 na? So j cube is minus j. Now, what will be my next question? What is value of j raised to 4? What is value of j raised to 4? 1.
So this can be written as j square into j square. So -1 into -1. So it is nothing but 1. So remember these basic identities. J is under root -1, j square is -1, j cube is minus j, and j raised to 4 is 1. Okay. So till now, that is a complex number x plus jy. Magnitude of z is under root x square plus y square. Angle of z is tan inverse y by x. Conjugate is x minus jy. Conjugate is x minus jy. So z into z bar is magnitude z square. Z into z bar is magnitude z square. And these basic values. Now, next you tell me what is z in polar form. So z in polar form, in coordinate system it is x plus iy, and in polar form, this is the polar form, r e raised to power j into omega. Omega is the angle, r is the magnitude. So here this is the coordinate system, and this is nothing but polar system. This representation is nothing but polar representation of complex number. So relationship between coordinate and polar is that here r is nothing but under root x square plus y square, and omega is that angle tan inverse y by x. ठीक है? Then in your 12th standard you might have studied circle, hyperbola, parabola, ellipse. Have you heard these words? Circle, hyperbola, parabola, like this? Yes, okay. So the thing is that magnitude z equal to r. If I write magnitude z equal to r, right? So here you can see that r is nothing but under root x square plus y square, and this is also the magnitude. Yes or no? This is also the magnitude of z. So your magnitude of z is nothing but r. Here, magnitude of z is nothing but r. So this thing is representing this magnitude z equal to r is equation of circle. Is equation of circle. Magnitude z equal to r is equation of circle with सर्कल आया तो सर्कल को क्या रहता, सेंटर रहता, और सर्कल को क्या रहता, रेडियस रहती. So with center at 0 0, that means origin is the center and radius r. Radius of the circle is r. So we have one circle having center, origin. This is the center and it has a radius r. The radius of the circle is r. So magnitude z equal to r, very important, very important. That magnitude z equal to r is the equation of circle with center at origin and radius r. Then next, magnitude z minus z naught. Here z naught is also a complex number. Z is x plus iy, complex number. Z naught is also one complex number. So magnitude z minus z naught equal to r is equation of circle. It is also the equation of circle having radius r, and center at z naught. Center at z naught. Now listen carefully. The center will have two coordinates x y, like 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 2 3 4, like that. It will have two values x and y, and z naught is one complex number. So suppose z naught is x naught plus I y naught. So its coordinates are x naught comma y naught.
So magnitude z minus z naught equal to r is the equation of circle having radius r and center at z naught, and that is z naught is nothing but x naught comma y naught. Okay. So very important, magnitude z minus z naught is the equation of magnitude z minus z naught equal to r is the equation of circle having radius r and center at z naught, and z naught is, let us say, x naught minus y, x naught comma y naught. So that will be our center. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, z माइनस z नॉट है, z माइनस z नॉट है, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर वाइल फाइंडिंग आउट द सेंटर. यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल फाइंडिंग आउट द सेंटर. प्लस माइनस की गलती करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. चलो अभी एग्जांपल देखेंगे. आई होप यू विल नॉट डू द मिस्टेक. यू हैव टू डू कंपैरिजन केयरफुली, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड z माइनस 2 माइनस 3j, फिर से मैं आई यूज कर रहा हूं यहाँ पे j, ठीक है. हाँ, मैग्नीट्यूड z माइनस 2 माइनस 3j इक्वल टू 4 is equation of circle with, you have to tell me the answer, center equal to question mark, radius equal to question mark. What is the center? Magnitude z minus 2 minus 3j equal to 4. What is the center? सेंटर ऐसा आएगा. यस, यू हैव x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. सेंटर कैन नॉट बी 2 plus 3j. सेंटर इज लाइक दिस फॉर्मेट, x naught y naught or 1 1 2 2 0 0 4 1 1 4 like that. So center is 2 comma 3. So what you can do, you can write this equation as magnitude z minus, you can take minus sign common, then inside bracket 2 plus 3j equal to 4. So your z naught is nothing but 2 plus 3j, and center is, this is nothing but 2 comma 3. So here you do the mistake, you don't take minus sign common, ठीक है. So you have to be careful. कुछ स्टूडेंट आंसर दे देंगे इसका सेंटर -2 -3, that is wrong. And radius, this is the radius, this is the radius, equal to r is the radius, so radius value is 4. Equal to r is the radius, so radius value is 4. चलो अभी आप लोग मुझे बताइए सेंटर सर्कल, ठीक है. और चला रिपीट वंस अगेन, z minus z naught equal to r is the equation of circle. Radius r, this is the standard stuff. Radius is r, and z naught is nothing but one complex number. For example, if it is x naught plus j y naught, so that is nothing but in coordinate system it is x naught comma y naught. So that will be the center. चलो ये इक्वेशन क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड z minus z naught equal to r. If it is clear, reply in chat box with C. If this equation is clear, reply in chat box with C. ओके, चलो फिर अभी बाकी लोग क्लियर है क्या? यस, लेनी यस, ओके. चलो अभी नेक्स्ट आप मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड z minus 1, सिंपल, मैग्नीट्यूड z minus 1 equal to 2. You first tell me the center. Tell me the center. 1 comma 0. अभी किसी ने सेंटर 1 दिया, आंसर सिर्फ 1 दिया. वैष्णवी, सेंटर सिर्फ 1 नहीं रहेगा, सेंटर विल हैव 2 वैल्यूज. It will have 2 values. Just like other people are writing in the chat box, it is 1 comma 0. So here if I compare z minus z naught equal to 2, so if equal to r, if I compare with this, so r is 2, no problem. But with center you make the mistake. So center is nothing but, z naught is nothing but 1, and 1 is nothing but 1 plus j0. 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 plus j0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 comma 0. So very nice, you have given the correct answer most of you. Now try next question.
z माइनस टू जे, z माइनस टू जे इक्वल टू 2। चलो देखते हैं अभी कितने लोग आंसर देते हैं। z माइनस टू जे इक्वल टू 2। वेरी गुड, 0,2 इज द सेंटर। चलो कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड z माइनस z नॉट इक्वल टू r से। तो r तो 2 हो गया, नो प्रॉब्लम। हियर z नॉट इज माइनस टू जे, सॉरी z नॉट इज 2j, z नॉट इज 2j आफ्टर कंपेरिजन। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस 2j, this can be written as 0 plus 2j, so coordinates are 0 comma 2, so the center is 0 comma 2. चलो next, radius is 2, yes. Next question, magnitude z plus 3j equal to 4, center। थोड़ा टाइम लो लगे से, पर जल्दबाजी मत करो, बिकॉज फाइंडिंग सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। The center is 0 comma minus 3, very good. So again I will compare with z minus z naught equal to r. So by comparison z naught is nothing but minus 3j, after comparison z naught is nothing but minus 3j, so this can be written as 0 minus 3j, so center is 0 comma minus 3, center is 0 comma minus 3. So one more, so I hope you will not do any mistake. Z minus 2 plus 2j equal to z minus 2 plus 2j equal to 1, z minus 2 plus 2j equal to 1. So very good, center is 2 minus 2, center is 2 minus 2. So again if I compare z minus z naught equal to r, so z naught is nothing but 2, or if you take first you should take minus sign common in question. If I take minus sign common, so this becomes 2 minus 2j. So z naught after comparison is 2 minus 2j, that means 0 2 comma minus 2. चलो आप लोग काफी कंफर्टेबल है सेंटर फाइंड आउट करने से। आई होप यू विल कंटिन्यू दिस, दैट यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन सेंटर एंड रेडियस, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्ट स्टूडेंट आंसर लिखता सेंटर माइनस 2 2, जो कि गलत है। चलो नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ये क्या हो गया, यही क्वेश्चन ले लो। तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया, वी हैव सेंटर एट 2 कॉमा माइनस 2, और वो सेंटर सर्कल की रेडियस कितनी है 1, वो सर्कल की रेडियस कितनी है 1। तो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ आई ट्राई टू प्लॉट इट इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इट इज नथिंग बट 2, यहाँ पे 2 है, और माइनस 2 कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस 2 है। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट्स, horizontal is the x coordinate, this is x coordinate, this thing is x coordinate, this thing is y coordinate, ठीक है। तो 2 यहाँ पे x coordinate 2, y coordinate minus 2, so this is the point 2 comma minus 2 in the xy plane, this is the point in our xy plane, the circle is having radius 1, सर्कल को रेडियस कितनी है 1, तो एक यूनिटी सर्कल यहाँ पे एक रेडियस का सर्कल में ड्रॉ करो, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा सर्कल का इक्वेशन जो कि था z माइनस 2 प्लस 2j इक्वल टू 1, तो ये इसका सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आई होप यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन प्लॉटिंग इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3, these are the x coordinates, these are the y coordinates 1 2 minus 1 minus 2 minus 3, like this, these are the y coordinates, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ, okay, I hope if you are comfortable then we will go to the next question. Now if I want to, my next point is if I want to check करना है मुझे whether any point or any value is inside circle or outside circle, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन, यही सर्कल एक ले लेता मैं 10,
10 सर्कल के अंदर है, बाहर है, बाहर है, 10 सर्कल के बाहर है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। बट समटाइम्स इट इज कंफ्यूजिंग, सो आई विल फर्स्ट यू ड्रॉ द सर्कल, उसके बाद चेक करना ये पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, दैट विल बी डिफिकल्ट, दैट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है, दैट मेथड वी विल फॉलो टू चेक वेदर एनी वैल्यू इज इनसाइड और आउटसाइड सर्कल। So that method we are going to follow. ठीक है, so the method is that, now important, listen carefully, the method is that suppose this is one equation of circle और मुझे चेक करना है कि whether any value or any point, value or point, हाँ, value or coordinates are inside or outside। वैल्यू पे ज़्यादा चेक करेंगे ऐसे हम, इनसाइड और आउटसाइड। तो आपको वो क्या करना है, वो चीज़ z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, वो चीज़ आपको z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फिर ये चीज़ कैलकुलेट करना है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। जो भी अंडर रूट का फॉर्मूला है उससे आपको ही कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। और उसके बाद इफ दिस मैग्नीट्यूड z, जो कि ये जो वैल्यू थी, ये क्या थी, यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया अभी, वैल्यू माइनस z नॉट, इफ दिस इज लेस देन रेडियस, इफ दिस इज लेस देन r, दैट मीन्स इट इज लेस देन रेडियस ऑफ सर्कल, then point is inside, then the value is inside circle, and if the magnitude z minus z naught is greater than radius, r, then it will be क्या होगा, inside के लिए less than magnitude, and for if the magnitude is greater, that means the value is outside circle, आउटसाइड सर्कल। चलो एग्जांपल से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये, अभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो, बट एक इतना चीज तो भी याद रख लो, दैट इफ इट इज लेस देन रेडियस द वैल्यू इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड दैट सर्कल, और इफ एनी इक्वेशन इज देयर और कर्व इक्वेशन इज देयर इनसाइड दैट कर्व, ये चीज भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड z माइनस 2j इक्वल टू 4 is equation of circle. Now question is, check 3 is inside or outside. Number 2 question, check 2j is inside or outside. Next, third question is, 1 is inside और आउटसाइड। चलो अभी वन बाय वन स्टार्ट करिए। तो पहली चीज, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और हमको चेक करना है 3 को कैसे लिखेंगे, 3,0 या फिर 3, सिंपली 3 इज इनसाइड और आउटसाइड। तो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, ये 3 को z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, इन प्लेस ऑफ z पुट 3। वेरी गुड, सम ऑफ यू हैव गिवन द आंसर आल्सो। तो 3 को z की जगह पे पुट करना है, सो दिस विल बी 3 माइनस 2j। What I have done, in place of z I have substituted 3। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 3 माइनस 2j। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स स्क्वायर माइनस बी है, तो भी ये क्या होगा प्लस, सो 3 स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, so its value is nothing but 25, under root 25, under root 25 is 5, it is greater than radius, 5 is greater than radius, radius कितनी थी 4, so 5 is greater than radius, so 3 is outside circle, 3 is outside circle, 3 is outside circle। बहुत लोगों ने इनसाइड का आंसर दिए,
3 is outside circle. Okay, sorry. Yes. So this is nothing but under root 9 plus 4, that means under root 13, na? And under root 13 is less than 4. Under root 13 is less than 4. Under root 13 is less than 4. So that means under root 13 is less than 4. So it is inside. Very good. 3 is inside the circle. 3 is inside the circle. Okay. Next we have to check 2j. 2j is inside or outside. 2j is inside or outside. So z की जगह पे 2j substitute करो. So it becomes 2j minus 2j. That means 0. 0 is less than radius 4. Radius is 4. 0 is less than 4. Therefore again 0 is inside. 2j is inside the circle. Not 0. 2j is inside circle. Yes. ठीक है. Next we have to take 1 is inside or outside. We have to take 1 is inside the circle or outside the circle. So in place of that, substitute 1 there. So it becomes magnitude 1 minus 2j. So its magnitude is under root 1 plus 1 square plus 2 square, that means 4. Under root 5, its value is less than 4. So again answer is inside circle. So 1 is inside the circle. 1 is inside the circle. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना थोड़ी जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड z माइनस 3j इक्वल टू 5. चेक 5 is inside or outside circle. Next check 4j is inside or outside circle. चलो ये दो क्वेश्चन है. ओके, 1 is inside, 1 is outside. पिछला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप. somebody has given 1 is okay. Answer 1 for this question. Answer 1 you are giving. Okay. चलो 5 we have to check. So this will be 5. In place of that substitute 5 there. So 5 minus 3j. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 प्लस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9. सो अंडर रूट 34. अंडर रूट 34 is greater than 5. It is greater than the radius of circle. So 5 is outside. 5 is outside circle. 5 is outside circle. चलो दूसरा चेक करना है 4j. तो z की जगह पे 4j सब्स्टिट्यूट करेंगे. z की जगह पे 4j सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बी 4j minus 3j. दैट मीन्स j. एंड j का मैग्नीट्यूड रहता है 1. j का मैग्नीट्यूड रहता है 1. सो इट इज नथिंग बट it is less than radius of circle. It is less than 5. So it is inside. 4j is inside circle. 4j is inside the circle. I hope you know that magnitude of j is 1. Magnitude of j is 1 because in our formula this can be nothing but 0 square plus 1 square. 1 के j के पहले लिखा है 1. So it is nothing but under root 1 square, that means 1. Magnitude of j is 1. Magnitude of j is 1. So what will be magnitude of 3j? So this is nothing but 0 plus 3j. So magnitude is under root 0 square plus 3 square. That means under root 9. That means it is nothing but 3. So magnitude of 3j is 3. Magnitude of 3j is 3. Okay. थोड़ा इनसाइड आउटसाइड की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमको. We should have a good practice of inside outside because that will be the base for our questions. Inside है outside है. z minus 2 minus 3j equal to 1. Check 2j is inside or outside.
check 4 is inside or outside. Two is inside or outside. Okay, these three questions you try. Pehla 2j. So this will be magnitude. Z की जगह पर 2j सब्स्टिट्यूट करेंगे, so 2j minus 2 minus 3j. So that is nothing but minus 2 minus j. Minus 2 minus j. So its magnitude is under root 5. 2 square plus 1 square, that means under root 5. It is less than, it is greater than radius. It is greater than radius. It is greater than r. 1. Radius is 1. So it is outside. So 2j is outside. Similarly, check for 4. 4 is also outside. 4 minus 2 minus 3j. That means 2 minus 3j. That means under root 2 square plus 3 square. That value is under root 13. Under root 13 is greater than 1. So it is outside. And 2 is inside or outside. 2 to cancel 3j. Magnitude minus 3j is. चलो थर्ड पॉइंट चेक करना है. 2. 2 इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो z की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो. z की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो. तो दिस विल बी 2 minus 2 minus 3j. ये 2 कैंसल. So this is nothing but minus 3j. That means magnitude of minus 3j is 3. It is greater than radius. It is greater than radius. So again it is outside. Z equal to 2 is outside circle. Z equal to 2 is outside circle. Okay. So I hope you know how to determine magnitude angle. अभी angle की थोड़ी सी बात कर लेंगे. So 2 minus a, मैं simple example लेता हूँ. X minus iy. What will be its angle? Angle equal to question mark. So angle of x minus I नहीं है, jy. Angle of x minus jy is, angle of x minus jy is minus tan inverse y by x. Minus tan inverse y by x. Then what is angle of 1 upon x plus iy? Try करो. What is angle of 1 upon x plus iy? So 1 का एंगल है 0, 1 का एंगल है 0, x प्लस आई वाई का एंगल है tan inverse y by x. This is the angle. ठीक है. Which angle, when once it goes in the numerator, so this becomes angle 0 minus angle tan inverse y by x. ये एंगल जब ऊपर जाता तब सब्सट्रैक्ट होता. Whenever this angle is going in the numerator, it is getting subtracted. So overall angle is minus tan inverse y by x. So this is the angle of 1 upon x plus iy. Minus tan inverse y by x. Now what is angle of 1 upon x minus iy? X minus jy. What is angle of x minus jy? Angle equal to question mark. Okay, I will give you the option. Very good, tan inverse y by x. So this is nothing but numerator angle 0 degree, denominator angle tan inverse minus tan inverse y by x. This is the denominator angle. Once it goes in the numerator, it will get subtracted. So minus, and already angle is minus tan inverse y by x. So this minus minus becomes plus. So overall answer is tan inverse y by x. तो जब ये एंगल ऊपर जाता तब सब्ट्रैक्ट होता, तो माइनस, और ये एंगल की क्या वैल्यू थी माइनस tan इनवर्स, तो माइनस tan इनवर्स, ये माइनस माइनस बन गया प्लस. सो आंसर इज tan इनवर्स y by x. So you should be good in calculating magnitude and angle.
Tell me angle of 3j. Angle of 3j. Angle of 3j equal to question mark. Anyone? Pi by 2, 90 डिग्री. ठीक है. सो 3j को कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस 3j. तो इसका एंगल रहता है tan इनवर्स y by x. y 3 है, x आपका 0 है, तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स इंफिनिटी. 3/0 is infinity and tan inverse infinity is nothing but pi by 2. Tan inverse infinity is pi by 2. What is angle of 2? Angle of 2. What is angle of 2? Simple question. So this is nothing but 2 plus 0j. 2 plus 0j, so tan inverse y is 0, x is 2, so tan inverse 0. Tan inverse 0 has value 0.